The story that we want is a story of we seeing the light. The story we want is a story of miracle or even a lottery. But the story that is of struggle. The story is not warm and fuzzy. The story is stone cold. But one thing is for sure, as this song said, whatever the case, on my tongue, on my lips is hallelujah, praising the Lord. Whatever is the case, I am giving everything I got. Whatever the case, I am laying bare my truth. I'm burning my fuel. I'm lighting my candle. I'm giving away my light. And that's a life worth living. The story we want is a Facebook story. A Facebook story of pictures that are seen. The story that really is what really happened when the picture was taken. The story behind the story. We all know that. I'm not saying goodness doesn't exist, fun doesn't exist, love doesn't exist, miracles don't exist. They all do, but so do other things. We see babies being born, a matter of utmost celebration. A new life is being brought on this planet. You welcome the baby and you congratulate the family, the extended family, the parents especially, and all the loved ones. And you rejoice as part of this extension of this community. But the birth of the baby was not without struggles. If anything, it is the utmost struggle. The most struggle a person can bear is through the birth of a child, which is really a mother, not even father. You need a father, but the woman is going to do it alone if there's no father. The physical body going through an expansion, it is not pain, they say. It's the expansion of the body. There's an expansion of the body, there's an expansion of the heart, there's an expansion of consciousness that takes place, and the mind is shattered, body is shattered. What you see on the Facebook is a cute picture of a baby with parents. What you don't see is what happens 99% behind. The struggles, the daily struggles, the grind. So a baby is being born every single day, not just physically, but it's our lives. The struggle is about baby trying to come out. When there is struggle in life, know that a baby is coming out. When there's a struggle, know that a baby is about to come. And it is a process of welcoming the pain. It is a process of accepting the pain, because it's not the pain you're welcoming. You're welcoming anything that comes in the process of welcoming the child. It is the goal or the cause that you are married to, whether wanted or unwanted. The goals of life are fourfold. Purusharthas. Dharma, Artha, Kama, Moksha. Dharam means dharam. Dharam is just not duty, it is beyond duty. The dharma of a human being. We have Stri dharma, the dharma of a woman. We have Purusha dharma, dharma of a man. And now in the secular world, even that is being questioned. I'm not questioning the people who are going through the struggle, but the society as a whole. Those people who are genuinely struggling with identity, you empathize with them. And you accept whichever way they want to go. That is not the point. But the society losing meaning of it is a problem, because we don't understand dharma anymore. The dharma of jaggery, of good, is its color, its chipchipahat, its stickiness. It is slightly pungent. It has a smell. It has a little bit of. It has a darker color and a darker taste to it. It is not refined crystallized sugar, which is bereft of all its values, of all its dharma. White sugar is adharmic in that sense. And jaggery, gur, ya shakkar, is
Dharmic. That is the word. Has white sugar committed any mistake? No, but it has lost its essence. And when we lose our own essence, that is when we become adharmic. Dharma and adharma is not what we have very singularly, narrowly put as sin or good karma. It is not just that, bad or good. Losing my own value, and let each person define that. Put aside this religious context, nothing against it, but the interpretations are also very particular or peculiar by different people at different times in different contexts, and the way we understand those interpretations, the way we understand those words and what they mean to us is also unique to each person based on our cultural upbringing and based on really also lack of understanding of language. We don't have rich understanding of language, unfortunately. Our language and understanding is very narrow, and media has made it even more narrower, more polarized, party based, politicized, and dividing. So we are have become so habitual at looking at narrow sense of words versus having a broad-minded understanding of words, of scriptures. And besides, scriptures are not the real deal. They are just expression of understanding of something. It is not the real thing. My essence, scriptures are now going to tell me, I am going to discover it for myself. I have to value it myself. I'm good at certain things. I'm not good at certain things. I have to find my own values, my own essence, my own dharma. Stradivarius, who made violins in Italy, he would make one violin a year. And while other people will shell out dozens, if not scores of violins made, maybe even hundreds, some artisans could make hundreds of violins a year and could make more money. And Stradivarius had a cause. He was married to his Lord. He was doing it for God. He was following his inner voice. The quality control was guided by his inner being, his inner dharmic system. We all have it. It may be feeble, that voice has maybe become feeble because the other voices are too loud and we're entertaining other voices. Everyone has that inner voice going on. If you are not able to listen to that inner voice, it is because you have allowed other voices to overwhelm you, or you tend to listen to and follow other voices. Which voice are you married to? Your marriage means obviously something else. The outer voices, the inner voices, the voices from the past, the fear voices, the voices about the fear of future, all kinds of voices are going inside of us. Hallelujah, 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 hallelujah. That is going on in every heart. Whether it is Krishna, 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 whether it is Sai or Shiv or Allah or Jesus or Mother Mary, whatever it is. And it may not be these words. Hamsa Gayatri is in any case going in on human beings. So hum, breathing in so, breathe out hum. Take this opportunity to do some so hums. Breathe in deep so. Every breath of mine is reminding me who I am. Who am I? That I am. That I am. I can choose to just listen to this voice, and that would be sufficient. It can and will become the guiding force of my life if I choose to make it. Or I can choose to ignore it as something so common, so insignificant.
because it is available every moment. But I forget that my life depends on it. My life depends on it. Why don't I value it? Why don't I value air? My life depends on it. Why don't I value water? My life depends on it. Because it is freely available, it is ubiquitous. We value things which are rare. When aluminum was discovered for the first time as a metal, I don't know which part of the world it was. I'm going to call it the Roman Empire. I'm just going to say it. I don't know which kingdom was it. And it was much more expensive than gold at that time because it was rare as an element, as a metal. It was a new metal, so lightweight. And I believe the emperor's son or child was given this a rattler or a toy made from aluminum at that time. They did not know it is carcinogenous, it is bad for children. But the point is rarity. Why is Bitcoin expensive? It is limited in number. So it's rare. It is a certain quantity. And as more people buy it, its value goes up. As more people sell it, its value comes down, as long as the number of shares, number of quantity of Bitcoins is limited. So the rarity of an event is considered more important for us human beings. At some point, the stars were easily visible for naked eye, not too long ago, 100 years ago, when the industrial revolution was not quite there, when our atmosphere was not polluted with so many pollutants in the air, and the light pollution was also not there. You could visibly see millions and billions and trillions of stars with your naked eye, and you could see Milky Way galaxy. You still can if you go to a place which is away from air pollution and light pollution. I couldn't believe a few years ago we went to about 4.5 hours drive from here to do exactly that. And it was unbelievable that I could see the Milky Way with my naked eyes. There was a comet also going on at that time, and I could see the tail of the comet. The truth is out there. We just have to get rid of the blockage that comes in the way of us seeing the truth. The atmospheric, externally or internally created pollution has to be removed. And the eyes have to adjust to the light, to the low light condition. It does adjust, which means we have to starve our sensory stimulus, constantly desiring and wanting in this age dopamine of some sort, which is easily available through social medias nowadays. Denying certain things, getting rid of certain blockages, and sitting with it, you will listen to that inner voice. And it starts with having an intention. I want to listen to my inner voice. The inner voice wants to be heard. Think about it. A beacon, Soham, that is constantly chanting itself until the last breath, reminding ourselves of who we really are. It's there. We just have to become aware of it. Take a deep breath, breathe in So, breathe out Hum. Don't run away from struggles. Don't run away from problems. Don't run away from difficulties. Wherever your weakness is, don't run away from it. Stick with it. That's how you become strong. Face it. That's how the fears go away. Listen to it and you will hear it. Don't question it. Don't question its lack of existence. That is ignorance of the highest order. And don't hit yourself foolishly saying that I'm not capable. Give yourself
time for yourself and honor yourself, honor your values, honor your dharma. Each person has their own unique dharma. Who am I? What am I made up of? What values are important for me? Stick with it, even if nobody else will stick with it. And you're going to be tested. Your value system is going to be tested. I have to honor who I am, what I stand for. It may be lossy, unsuccessful, scoffed upon, derided, laughed at, not generally accepted. In accounting, generally accepted accounting principles. Yeah, it may not be. It may be unique. And that may be something you bring forth to this world. The very thing that you have buried down may be the very thing that you have brought forth to this world. I am the one who's gonna keep that light shining. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. I'm gonna let it shine. Somebody else may not. They may want to extinguish it, but I'm gonna protect that light. Who am I married to? I have to ask myself that question. What am I living for? What am I willing to die for? And that thing can change and evolve. It's okay. And sometimes it actually is a beacon which stays with you for the rest of your life. Have that thing for which you are willing to do anything and everything, that cause. So there is no winning and losing, because that cause will continue beyond your death. I have to value my values. I have to value what is important for me. I have to value what my unique abilities are, even though they are not accepted by other people as normal. That's all there is to it. That's all the inner child work in a nutshell. I value myself, the craziness. Most of the very successful people, most of the artists, they're very crazy people in the eyes of non-artists, the regular people. Okay, so if you have something going on, I'm not saying you have to be crazy. If you have something going on where people says, why are you being silly goose or stupid or naive, or why are you not being smart about this, you should know better, your so-called Achilles heel, your weakness, that may actually be your strength. I'm the one who has to guard it, value it, give light to it. And the easiest way to do that is really meditation. Meditation is the easiest, most beautiful way of accepting, connecting with, resonating with my true self. My true self is the repository, or my true self is the cause of all those values in me. So when I connect with my true self through meditation, then I empower my uniqueness, then I empower my values, then I encourage my positivity, even though the other people may not accept it. I give acceptance to it by giving it some time, by giving it some limelight. Apparently, this world that we live in is a stadium, and including right now, the angels and guides are hovering above us. The gods are watching us. Our every single move is watched. Not in a bad way. They don't get into our privacy. Okay, they don't get into those matters. Just understand that. I also used to feel that way. Oh my God, God knows everything about me. Oh my God, I feel, like an X-ray vision. It's not quite like that. We all are allowed or given our privacy. And the same thing, we have to lend it to other people. Okay, don't barge into other people's privacy. It's not right. That's adharmic. It's
not dharmic to get into other people's business. That's a bad intention. Don't question people, don't ask people, don't tell people, don't make people feel bad by barging into people's privacy, because you're going to get the same thing in your life if that's what you do. It's a form of control. By making people feel bad, you feel good about yourself. So there are other ways to feel good about yourself, okay? Just because other people do these cheap things, we don't have to resort to these cheap things, okay? Leave it behind, drop it. From now onwards, I don't pry question into anyone's privacy, including this public forum going on, he, she, and they. And it's none of my business. It's people are going through it. Let them go through it. I know my dharma. I know my worth. I know who I am. So we're being watched at all times, and they're just looking for only good. They're not looking at the potholes or gutters. They're not looking in the toilet. Okay, they're not looking at the bad things we do. They are looking for the spark of light in each one of us, the glimmering hope in this cacophony, in this noise, in this din of life on this planet Earth. They're looking for harbinger of lights. They're looking for the warriors of the heart. They are looking for those people who are willing to stand up for themselves, for what they really are, whatever it is. Small or big is not the thing. Small or big, we make it. What the gods and angels and guides, what they look for is that goodness in the heart. Is that good intention? Is that good feeling? Is that good word, the kind word we give it to somebody that lifts somebody's spirit? That kind action, or holding back your unkind actions, your unkind words. Being kind to myself is the first step. Honoring and accepting as who I am is the first step. There may be a million things I'm not good at. Okay, let's start with rocket science. I can almost bet nobody's good in rocket science here. I don't know how to drive a big truck. I can drive a small truck. I'm not a fighter jet pilot. I'm not a pilot, period. So I can look for a million reasons that I'm not good at, or I can look for a handful of reasons that I'm good at. It is so much easier to look at what I'm good at. It's so much easier to live this life looking at goodness. Why waste my time looking at badness in myself and others? Good looks, look good in me, look good in others. Things that are not good, discard it. Switch your channel. Thinking good thoughts. What about bad thoughts? They may come, I just don't entertain them. I don't say, please welcome. I don't welcome them. They may come, but I don't welcome them. This is a private property, okay? Me, myself, is a private property. I don't welcome them. And God forbid, if I do entertain them, which by the way we all do, the moment I come to realize I've been entertaining bad thoughts, snap out of it. Quit. Drop it. Move on. I don't want to entertain this bad thought anymore. Because somehow we become accustomed to having them around, and we feel guilty discarding them because we have lost our discrimination. Because even the word discrimination is discriminatory. It is considered a bad word, whereas discrimination is vivek. भाई विवेक बुद्धि चाहिए. अच्छा बुरे धर्म अधर्म जो मेरा है वो पता होना चाहिए. मेरे को पता होना चाहिए मेरे लिए क्या ठीक चीज है. हम भूल गए हैं. भूख लगी नहीं है, किसी ने के घर गए हैं, उन्होंने खाना दे दिया, खाना पड़ेगा क्योंकि उनको बुरा लगेगा. भाई हम मुझे बुरा लगेगा उसका नहीं सोचना. किसी के घर गए हैं, उसको चाय जबरदस्ती पिला रहे हो. नहीं 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 पियो जी पियो. मैं नहीं मेरे को नहीं पीनी, मेरे को नहीं 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 पियो जी, चाय तो पीनी पड़ेगी. साथ में समोसे, साथ में अटरम पटरम खिलाता, ढिड थोड़ा खराब हो गया. It is just that. It is just that very simple. Let's learn to say no to things like that first. किसी के घर जाए और नहीं, I am good. मैं आपको मिलने के लिए आया हूँ, आई हूँ. I've come for a purpose. I've not come here to eat food. If you're not hungry, if you're not interested, for whatever reasons, politely, gently leave or say, I'm willing to sit with you while you have your meal. I don't have a problem, but I'm not going to eat.
और यस आई एम, थैंक यू वेरी मच, आई एम हंग्री फॉर वन रोटी, आई विल हैव इट, थैंक यू वेरी मच। यार डिजर्ट तो खाना पड़ेगा जी, या जलेबियां बनी हैं ये गुलाब जामुन, तो यार 2 गुलाब जामुन से क्या बनेगा, और रबड़ी तो डालनी पड़ेगी ना। तो ये एंडलेस होती है। उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खातिरदारी कर रहे अपने हिसाब से, मेरे लिए ठीक नहीं है। खुद देखो यार, तुमको तुम्हारे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। अपने मुंह में क्या डाल रहे हो, अपनी आंखों में क्या लेके लेने दे रहे हो, अपने कान में क्या डाल रहे हो, अपने मुंह से क्या निकाल रहे हो, अपने हाथों से क्या पकड़ रहे हो, अपने हाथों से क्या कर रहे हो। अब तुम्हारे पैर कहाँ जा रहे हैं भैया, वो तुम्हारे हाथ में हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या हो रहा है, व्हाट थॉट्स आर यू एंटरटेनिंग, व्हाट फीलिंग्स आर यू एंटरटेनिंग, दैट इज इन योर हैंड। तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, ना तुम्हारे बाहर तुम्हारा कंट्रोल है, ना तुम्हारा अंदर कंट्रोल है। रोना पिटना शुरू हुआ, मेरे को अंदर की आवाज नहीं सुन रही। कैसे आवाज सुनेगी यार, भीड़ भड़के में गुम हुए हो, बुरा हाल हुआ है। खुद का पता नहीं है, आईडी कार्ड खुद का ही नहीं पता है कि तुम है कौन, को पूछ ले पुलिस वाला भी, बोले मैं गुम हो गया हूँ। हाँ जी, क्या है नाम, पता नहीं जी, कहाँ रहते हो नहीं पता, कहाँ जाना है नहीं पता, गुम हो गए हैं। ये हालत हुई हुई है हमारी। तो पहले अपनी आइडेंटिटी लो भाई, तुम हो कौन है, स्वधर्मा। लोग यहाँ पड़े हुए हैं, हिंदू धर्म ऐसा है जी, हिंदू धर्म ज्यादा अच्छा है, मुस्लिम धर्म खराब है। मुस्लिम धर्म के तुमको पता है क्या है धर्म? उस सलाह मुसलमानों को मुस्लिम धर्म नहीं पता, हिंदुओं को हिंदू धर्म का नहीं पता। लड़ रहे हैं दोनों, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। भड़के हुए हैं मीडिया के तरफ, पॉलिटिकल व्यू की तरफ भड़के हुए हैं, खुद का पता नहीं है। और भाई धर्म मेरा हिंदू नहीं है, मैं मुसलमान नहीं हूं। मैं इंसान हूं भाई, आई एम ए ह्यूमन बीइंग। और मैं कोई एवरेज ह्यूमन बीइंग नहीं हूं, मैं पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग हूं। मेरा धर्म क्या है भैया, मेरा स्वधर्म क्या है, वो कैसे पूछ पता लगेगा? वो दिल की आवाज सुन के ही पता लगेगा आपको। लिसन टू द वॉइस ऑफ द हार्ट। बहुत सिंपल है, इतना कुछ ताम झाम बोला है, इसीलिए बोला है कि बॉटम लाइन है, लिसन टू द वॉइस ऑफ योर हार्ट। वो जो बोलता है बोलती है उसको फॉलो कर लो। मैं आपको सुनाता हूँ आपके दिल की आवाज, को सुना सकता है आपको आपके दिल की आवाज है? उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वो चिल्लाएगा नहीं। सूरज जब आता है वो चिल्लाता नहीं है, वो अपना काम करता है, उसको बोलते हैं धर्म। सूरज अपना धर्म निभा रहा है। हाँ जी, धरती अपनी धर्म निभा रही है। चिल्लाती कब है धरती? जब अन्याय हो जाता है, भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, वो बोलती है बस हो गया यार, तब चिल्लाती है धरती। वरना धरती अपना काम करती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगा देती है। सब अपने धर्म कर रहे हैं, तो मैं अपना धर्म क्यों नहीं कर रहा हूं भाई? क्योंकि सूरज पृथ्वी अपना धर्म कर रहे हैं, इसलिए वो अमर हैं, अमर। तो ऐसी करनी कर लो ना कि हम भी अमर बन जाएं। अमर कैसे बनोगे? अपना धर्म निभा के, तभी अमर करोगे। अपना धर्म निभाओ, तुम अमर हो जाओ। कैसे? लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ द हार्ट। और कैसे? जो अपनी गंदगी जो तुम्हारे बीच में है उसको निकाल दो भाई, जो भी गंदगी है, जो अधर्म तुम्हारे अंदर भसा हुआ है ना, उसी को निकालना है। जो ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं तुम्हारे अंदर, चलो कर लो, एक मेडिटेशन कर लो। ये मेडिटेशन ही थी बाय द वे। ये भी मेडिटेशन ही थी। अपने आप से जुड़ना, अपने आप के साथ बैठना, अपने आप के साथ बातें करना, अपने आप को सही रास्ता दिखाना, अपने आप को मुड़े हुए रास्ते से मोड़ लेना, अपनी धुन में चलना, अपने दिल की बात को सुनना और वही करना जो मेरी दिल बोलता है। दुनिया तो कुछ भी बोलेगी, उनको तो अपना नहीं पता, मेरे बारे में क्या पता होगा, उनको तो अपना धर्म नहीं पता। लोग क्या कहेंगे? लोगों को तो कहना है, ड्रामे करने हैं उनको तो। सबसे बढ़िया मंत्र ना, मतलब बढ़िया, वैसे तो बढ़िया मंत्र बड़े होते हैं, आज जो मेरे को सबसे बढ़िया मंत्र लग रहा है वो है असतो मा सद्गमया, फ्रॉम अनट्रूथ लीड मी द ट्रूथ, तमसो मा ज्योतिर्गमया, फ्रॉम डार्कनेस लीड मी टू द लाइट, मृत्योर्मा अमृतम गमया, फ्रॉम डेथ लीड मी टू इमोर्टैलिटी। श्री रामचंद्र जी का अंत हो गया, उनकी बॉडी खत्म हो चुकी है। श्री कृष्ण जी अब रहे नहीं यहाँ पर। जीसस क्राइस्ट को भी क्रॉस में डाल के उनकी बाय बाय कर दी थी। जो भी इस ह्यूमन फॉर्म में है उसका अंत हो गया है। चिरंजीवियों को छोड़ दो, अगर जैसे हनुमान जी हैं वो चिरंजीवी हैं, वो भी यहीं पर हैं।
उन्हीं की बदौलत से ही हमने शायद उनको याद किया हो अभी यहाँ पर। बोलते हैं राम से बड़ा राम का नाम। जो राम का नाम है वो उससे बड़ा, क्योंकि वो अनश्वर है। राम का नाम कैसे अनश्वर हो गया? क्योंकि भैया उन्होंने काम ऐसे किए, उन्होंने अपना धर्म निभाया, इसलिए। इतने राजा आए हैं, अच्छे अच्छे राजा आए थे, उनको तो नहीं याद किया जाता, उनका तो नाम अमर नहीं है भाई। ओनली दोज हु हैव फॉलोड देयर धर्मा डिस्पाइट डिफिकल्टीज। वो डिफिकल्टीज तो आएंगी यार, दूर। मम्मी जी मैंने बोल दस दे होंगे सीगे, वीर जनों पे दुखड़े आते, उनसे तो वह परखे जाते। भाई only on the brave ones difficulties come, because only through that they are judged, they are honored, they are realized. Only when you pass a test, right, a test has to be given, only then you pass the test, then you are honored with a degree. You cannot say I sat through medical school, I'm a doctor. No, you passed the test, a rigorous test, or any other school for that matter. Life is also a school. Various tests are going to come, they are going to be difficult, and you have to go through the test. रोना पटना जितना मर्जी चला लो यार, बड़ा डिफिकल्ट एग्जाम है, टीचर ने पढ़ाया नहीं, डजंट मैटर, व्हेन द डेट कम्स द एग्जाम इज गोना बी देयर, यू हैव टू गो थ्रू इट जैसे तैसे. When difficulties come, you go through it. When you go through difficulties, you become stronger. We all have fears. You cannot continue to keep on running away from fears. I'm not saying face all the fears, but when at some point or the other you have to face your fears head on. And that is how you become stronger. And that is how you become unafraid. That is how you become courageous. And that is how you gain experience in life. By going through things. I have done it. That's your experience. I've read about it is not your experience. गीता का उपचार तोता भी दे देता है, पंडित भी दे देता है. Have you understood the meaning? Have you gone through at least one of the teachings? Only then it is your experience. तो ये भगवत गीता हमारे दिल में चल रही है. Our Guru, our God is in our heart. Each one of us. The only difference is there might be blockages in some people at certain times. Remove the blockages, remove the noise, remove the garbage. And your inner voice becomes more clear, more loud. And you clearly know what you're supposed to do. ठीक है, टाइम लगेगा, so what यार, टाइम लगेगा तो क्या हो गया, कोई बात नहीं. वही पेशेंस है, वही सब्र है. सब्र करो, विश्वास रखो. बाबा ने तो बोला ही है, श्रद्धा सबरी 2 पिलर्स हैं, उसके बीच में से चलो. पूरी जिंदगी जबरदस्त है, भगवान के बीच में तुम श्रद्धा सबरी के पिलर्स के बीच में चलोगे, भगवान के दर्शन हो जाएंगे तुमको. बात खत्म हो गई. फेथ किस में? अपने आप में भैया. वो अपने आप में फेथ करो यार. भाग रहे हो इधर उधर इधर उधर, टकरा मारी जाने हो. फेथ इन योर सेल्फ को क्या बोलते हैं? हाँ जी, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं फरंगी लोग, उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस. फेथ इन माई सेल्फ. एक्चुअली फेथ नहीं है, इसका वर्ड भी, हमारी भाषा बड़ी जबरदस्त है यार. आत्मविश्वास. फेथ नहीं बोला, आत्म बोला है यार. आत्मा पे विश्वास बोला है. हाँ जी, किसके ऊपर? क्योंकि वो सेल्फ क्या होता है, उसको लगता है हम बॉडी नहीं है. सेल्फ इसमें कैपिटल एस. आत्मा इज माई रियल सेल्फ, माई ट्रू सेल्फ के ऊपर कॉन्फिडेंस. ओ भाई मेरे को पता नहीं अब ना, मेरे को आवाज दिखती है, मैं अंधा लूला लंगड़ा बहरा हूं. हाँ जी, जब हमारे इनर वर्ल्ड में चले जाते हैं, म्यूट हो जाते हैं, ना मेरे को उसकी आवाज सुनती है, ना मेरे को दिखता है, ना मेरे को लगता है, ना मेरे को फील होता है, ना मेरे को पता है कि मेरे अंदर वो वास कर रहा है. गुआंढियों के घर कौन कौन रहता है सानू पता है, मेरे अंदर कौन रहता है मैनू नहीं पता. सारियां दी खबर लेके रख लेनी है. लोगों दी चुगलियां करो बैठ के, टॉक and behind people's back and talk nonsense and gandagi. Niklo. The mind has become used to, like a makhi sitting on feces. The mind loves sitting on the feces. Just imagine it, your mind sitting on feces. टट्टी के ऊपर बैठा है, किसी के ऊपर मंडरा रहा है, पिन 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 पिन, और वहीं जाके तुम खाने के ऊपर बैठ रहे हो. उसी दिमाग को कैसे यूज कर रहे हो? सफाइयां करो भाई अपने दिमाग की. क्लीन योर माइंड. जो हुआ पहले, ड्रॉप इट नाउ. गेट रिड ऑफ दोज बैड हैबिट्स.
of entertaining bad thoughts about yourself and bad thoughts about other people. इस मक्खी को चेंज कर दो, मक्खी को चेंज करके मधुमक्खी बना दो. Change, make, transform this fly that is your mind into a butterfly which sits on the flowers and sucks the nectar. Butterfly also has a meaning. It is a papillon. It is transformative. From an insect, from a caterpillar, then it goes into this dark night of the soul, which is the cocoon or chrysalis. Then it emerges out of it, completely transformed into a butterfly. That is life. Life is an opportunity given to each one of us. कमल के फूल जैसा मैं खिल पड़ूं, भले मैं कीचड़ में क्यों ना हूं यार, कमल के फूल जैसा मेरे ऊपर कोई एक बूंद भी cannot contaminate me. Nothing can contaminate me. That is how I can make myself. Not really make myself, that is who I am. I just be it. Being myself is just that. And that transformative power is in each one of us. That is self-realization. And that is what the angels and guides and gods and goddesses are just supporting us on that journey. मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पंखुड़ियां खोलो, उड़ो, कूदो, खेलो, खुश रहो, खुशहाल रहो. जोता वाली माँ, जोता वाली माँ, ए जग जननी साई माँ, ए जग जननी साई माँ, हे माँ, हे माँ, जय माँ साई माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ साई माँ, जय जय वैष्णवी देवी माँ, जय जय वैष्णवी देवी माँ. जोता वाली माँ, जोता वाली माँ, पहाड़ा वाली माँ, जय जग जननी साई माँ, पहाड़ा वाली माँ, लाटा वाली माँ, जय जग जननी साई माँ. लाटा वाली माँ ਨੂੰ देखो, think, feel, visualize, imagine a light, a flame. और लाटा वाली माँ ਦੇ ਵਿੱਚ माँ ਨੂੰ देखो, अपनी जननी माँ को उस माँ उस लाइट के अंदर देखो. So in the flame see your Ishtadev, Krishna, Rama, Allah, Jesus, Buddha, Sai, लक्ष्मी माँ. जो तुम्हारी माँ है उसको देखो, जिसने तुमको यहाँ भेजा है. परमात्मा को देखो उसके अंदर. Let this flame enter the middle of your forehead, your third eye. Let this flame descend into the center of your chest, your heart chakra. Let this flame expand into your heart, taking away all the bad feelings, negative feelings, बुरी feelings. मेरे को बुरा लगता है, मेरे को फलान लगता है, मेरे को fear होता है, मेरे को sadness है, मेरे को anger है, जो भी है सब निकालो. चलो जी, बाहर चलो, झाड़ू मारो अपने दिल दे विच जाके. जी, किहदा झाड़ू? फ्लेम का झाड़ू, लाइट का झाड़ू मारो. डक्के का झाड़ू नहीं है ये, लाइट का झाड़ू है. सारी लाइट ना अंदर से डार्कनेस रिमूव कर देगी. वेयर देयर इज लाइट देयर इज नो डार्कनेस. चलो जी, कीड़े मकोड़े सुबह उठ के ना झाड़ू मारो, कीड़े मकोड़े अपने दिल के निकालो.
Let this flame expand into the rest of your body and give this flame to your five senses, your eyes, your ears, your mouth, your skin, your smell. Starting with the eyes. I see good. कुछ बुरा देखना ही नहीं है किसी के अंदर, अपने अंदर तो बिल्कुल नहीं बुरा देखना है जी। हाँ जी बोलोगे वैसे कि इम्प्रूव कैसे होगी, डोंट वरी अबाउट दैट। अपने आप को लव तो दे दो यार, अपने अंदर कुछ अच्छा तो देखो। साला अंदर बुरा ही दिखता है तुमको, कुछ अंदर अंदर अच्छा भी देख लो अपने अंदर। हैं? तुम्हारे अंदर सिर्फ बुराइयां ही क्या है? लोगों के अंदर सिर्फ बुराइयां ही हैं। आदत इतनी खराब हो गई है यार। हमने अपने विजन को चेंज करना है। आंखों को साला सफाई करो, लाइट दे के सारा अंदर से गंद निकालो अपनी आंखों में से, सब पुराना गंद निकालो। मैंने नहीं कुछ बुरा देखना, ना देख 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 बुरा। हाँ जी, कुछ नहीं बुरा देखना है, बस आज से अब से मैंने कुछ बुरा नहीं देखना। आई हैव इंटेंशंस ऑफ नॉट सीइंग एनीथिंग बैड इन मी और एनीवन आउटसाइड, और बुरी चीज़ों को नहीं देखना, बुरे न्यूज़ को नहीं देखना। मैंने नहीं देखनी वायलेंस। मैंने बैड न्यूज़ पढ़नी हुई नहीं है, बात ही खत्म हो गई। बट योर ईयर्स, मैंने बैड न्यूज़ नहीं सुननी, मैंने किसी की चुगली नहीं सुननी। आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग बैड अबाउट एनीबॉडी, आई डोंट वांट टू हियर बैड अबाउट मी। कहानी बंद कर लो जी। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड बाय जी, थैंक यू वेरी मच। I don't want to hear any backbiting or anything bad about anybody. Then give it to your mouth. Give this flame, give this light to your mouth. मेरे मुंह से sweet and soft and truthful, loving, kind, helpful words ही निकले प्रभु। ये सरस्वती माता आपका वास है, झाड़ू मारो सारा उठे। माता सरस्वती माता का मेरी जुबान पे प्रवास है। शुक्र है, इस सरस्वती माता की देन है कि हम बोल सकते हैं। जे हम कुछ भी बोल सकते हैं ना, ये सरस्वती माँ का देन है, वरना हम गूंगे होते। हम गूंगे नहीं है, शुक्र है भगवान का। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, हम बोल सकते हैं जी। आई एम नॉट म्यूट, थैंक यू। इसको ग्रेटिट्यूड है, मेरे को ग्रेटिट्यूड नहीं करना आता। ओ थैंक यू यार, आई कैन स्पीक फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन लेट मी मेक यूज ऑफ दिस टंग, लेट मी सिंग द ग्लोरीज ऑफ द गॉड। Let me talk sweet. Let me speak my truth. Let me share what is in my heart. Let me express myself freely, my feelings. इसीलिए कम्युनिकेशन के लिए दिया हुआ है, उसको कम्युनिकेशन के लिए यूज करो। Give this light to this flame to my smell, my nose. Imagine if I have no sense of smell. मजा ही नहीं आएगा खाने का यार, सोचो जरा। Breathe clearly and deeply. भाई इसी नाक के थ्रू दिस नोज आई ब्रीथ माई लाइफ ब्रेथ। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भाई, इट इज कनेक्टेड टू माई लंग्स। ग्रेटफुल 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 टू माई नोज। पूरी पूरी की स्किन, स्किन इज एन ऑर्गन, इज अ लार्जेस्ट ऑर्गन। स्किन इज नॉट अ छोटी मोटी चीज, ऑर्गन है जी, जिंदा ज्यादा ऑर्गन है। जैसे हार्ट ऑर्गन है, जैसे ब्रेन ऑर्गन है, जैसे लंग्स ऑर्गन है, स्किन इज एन ऑर्गन। सो सेंस ऑफ टच, जो हमारी फीलिंग सेंसेशन आती है वो टच से आती है। लाइफ एकदम बोरिंग हो जाएगी अगर सेंस ऑफ टच चला गया। तो एकदम पूरी फ्लेम के थ्रू अपनी शावर ले लो, पूरा का पूरा फ्लेम का शावर। जैसे हम पानी का शावर लेते हैं ना, फ्लेम का शावर, बर्निंग अवे इम्प्योरिटीज। ये लाइट का बाथ ले लो, सारी स्किन की टॉक्सिन्स निकले। स्किन तो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारी अंदर से गंदगी निकालता है पसीने के थ्रू। तो पसीने को मास्क करने की कोई ज़रूरत नहीं। पसीना आ रहा ना, शुक्र है भगवान का अंदर से गंद निकल रहा है भैया, शुक्र है। पॉटी सुसु छिक पद निकलता है तो स्किन से, जब निकलता है ना आपका ये पसीना आता है, शुक्र है भगवान का अंदर से गंद निकल रहा है। बिकॉज वट अदर वेज आर देयर फॉर बॉडी टू एक्सक्रीट द टॉक्सिन्स? दीज आर वेज फॉर अस टू क्लेंज आवरसेल्व्स। पूरी की पूरी बॉडी को फ्लेम से
अपनी पूरी स्किन को नहला दिया अच्छे से, बच्चे से, जैसे हम कृष्ण जी को नहलाते हैं ना, जैसे शिव जी को नहलाते हैं। पहले पहले भी पानी दिया, फिर दूध से नहलाए, दही से नहलाए, शहद दिया, विभूति से नहलाया, कुमकुम दिया, चंदन से नहलाया, पानी से नहलाया। ऐसे ही अपनी बॉडी को इस फ्लेम से नहलाओ। दिस बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ गॉड भाई, छोटी मोटी चीज छोड़िए, भगवान का टेम्पल है। इसके अंदर परमात्मा का वास है, आत्मा का विश्वास वास है इसके अंदर। लेट दिस फ्लेम ग्रो इनटू बिगर एंड बिगर फ्लेम्स। सबसे पहले अपने उसको दो, माइंड को। माइंड से ज़रा, चलो जी तालियां मारो, कौए को भगाओ, ऑल द क्रोज, चलो उठो, भागो, रिमूव द बैड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, चलो जी जाओ अपने घरों में जाओ, यहाँ आपका कोई काम नहीं है, निकलो यहाँ से। My thoughts are purified. I entertain good thoughts. From this point onwards, जो सो हुआ यार। अब बर्तन साफ कर लो ना यार। कल के बर्तन पड़े हैं जी, परसों के बर्तन पड़े हैं, कौन, और धो लो यार, अब धो लो, अब साफ कर लो हैं। गिव दिस फ्लेम टू ऑल। अब कोई कोई बॉडी में कोई, इफ देर इज एलिमेंट इन योर बॉडी, इफ यू आर हर्ट इन सम प्लेस, वेदर ऑर्गन सिस्टम और अ पर्टिकुलर प्लेस इन द बॉडी, गिव दिस फ्लेम टू दैट एरिया और एरियाज स्पेशल, जैसे बाम होती है। Now give this flame to the rest of your body, all the organs, stomach, all the system, digestive system, excretory system, and circulatory system, and nervous system, and muscular system, and skeletal system, and this system, and that system. सारे systems को दो. Immune system, respiratory system. All my systems are working well. I am healthy, my body is healthy, my mind is healthy, my emotions are healthy. Affirm it. I have a good life, my life is good. Let this flame expand into bigger and bigger spheres, and taking all the five kosha, Annamaya kosha, which is our body, Manomaya kosha, which is our mind, Pranamaya kosha, which is our life force, which rides through the breath, Vijnanamaya kosha, which is our intelligence, or Vivek buddhi, or Pragya buddhi, buddhi bolte the jisko. It's much more than intelligence, super intelligence. हमारी भाषा कितनी जबरदस्त है, बुद्धि है भाई वो, बुद्धि बहुत, बुद्धि ज्यादा बुद्धिमान है इंटेलिजेंस से। लैंग्वेज रिच बड़ी है। फिर आनंदमय कोश, वी हैव अ ब्लिस शीट। हम कुछ भी करते हैं खुश होने के लिए करते हैं। द पर्पस, वन ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। हैप्पीनेस इज अ barometer. When you're doing something that makes you happy, good, do it. I am happy, I am happy, I am happy, I am blissful. जब तुम बोलोगे सैडनेस ऑटोमेटिकली चले जाएगी, एंगर ऑटोमेटिकली चले जाएगी। उसका कोई काम ही नहीं है, कहता यार यहाँ तो वेलकम ही नहीं है, तो साले हैप्पी हैप्पी बैठे हैं, चलो जाओ कहीं और चलते हैं। Let this flame expand into beyond my body, into the place we are in, which is our home, our community, planet Earth.
सर्व का भला कुल का भला समस्ता लोका सुखिनो भवन्तु. And this flame expand into the solar system, Milky Way galaxy, the entire universe. This flame is सर्वव्यापी है. ये ज्योतां वाली माता सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है. It is present everywhere. It is all powerful. फेथ रखो इसके अंदर, इसीलिए तुम्हारा सब भला होगा. हाँ जी, माता मेरा कर रही है, सब कुछ हो रहा है. शुक्र है माता दा. जय माता दी, 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 जय माता दी. सर्वज्ञानी है, सब जानती है माता मेरे को क्या चाहिए. मांग लो जो मांगना है. अब इस स्टेट ऑफ बीइंग में मांग लो माता से जो मांगना है. मत्था टेको, जाके मांगो. आस्क व्हाट यू वांट, व्हाटएवर यू वांट टू मैनिफेस्ट. आस्क. मत्था टेको, शुक्राना करो भगवान दा. लख लख शुक्र है परमात्मा दा. ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड. मांग लिया ना तो हो जाएगा. आस्क एंड इट इज डन. विश्वास रखो, हो गया बस. Bring the flame back into your heart and hug yourself. I love me. This is inner child work. I love me. I love me. I love me. I love you. I love everyone. Everyone loves me. I love God. God loves me. Straight leg, get her dog coming out of sleep. Welcome back here and now. Hanji, present moment, time and place.